Fundamental rights, that is the soul of the Constitution. What are the fundamental rights? Rights are those favorable conditions of life which are recognized by the society and are implemented by the state. मतलब कि सोसाइटी में जो पहले से चलता आ रहा है, जो बिलीव रखते हैं पीपल, उनसे वो बनता है और इम्प्लीमेंट उसे कौन करवाता है? तो स्टेट गवर्नमेंट करवाती है. दोज राइट विच आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द ऑल राउंड development and well-being of a citizen of a country are termed as fundamental rights. Fundamental rights किसे बोला जाता है स्टूडेंट? तो वो क्या है? तो कंट्री के ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं एंड इवन सिटीजन के वेल-बीइंग के लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं, दे वर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. The fundamental rights are included in part 3 of the Constitution. No organ of the government and any authority can violate our fundamental rights. किसी को भी कोई ऐसा राइट नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट मतलब कि चेंज कर सके क्या या उसके अपोज जा सके. If someone feels that any of his right is violated, he or she can approach the court to get it implemented. अगर कोई भी पीपल को ऐसा लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, मतलब कि इफ यू हैव राइट टू स्पीक and if anyone you are in that condition के anyone is not allowed you to speak anything, so your right is going to be violated, right? So you can approach the court to get it implemented. Article 32 guarantees the right to move to the Supreme Court for the enforcement of right given by the Indian Constitution in Part 3. Following are the fundamental rights enjoyed under the Indian Constitution. What are the fundamental rights that enjoyed in our Indian Constitution? First is right to equality. Equality means all are equal before law. The Indian Constitution provides equality in the following ways. All the citizens are equal before law. Law does not discriminate between the rich, the poor, the black and the white, etc. All the citizens have equal opportunity for government jobs. Government jobs के लिए भी सबको equal opportunities होती है. However, some seats are reserved for SCs, STs and OBCs. Untouchability will not be tolerated in any form. Untouchability कोई भी form में tolerate नहीं किया जाएगा. Everyone will have an equal access to the public property. No one can be prevented from using pawns, wells, etc. on the basis of caste, creed and sex, or you can say religion even. तो ये सारे equalities के rules है जो fundamental rights में included है. Second is right to freedom. The Indian Constitution provides the right to freedom in the following ways. All the citizens of India shall have the right to freedom of speech and to express their views freely. All the citizens of India have the right to assemble peacefully but without arms. मतलब कि हार्मनी बना के रखना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं. The citizens can form associations or sub-unions. The citizens have a right to move or to go to anywhere in India. But of course we have that much freedom कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं इंडिया में. They can settle anywhere in any part of India. और कहीं कोई भी हमें इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल होना है, we can settle over there. It also holds that citizens have the right to information. Next is right to information. वो कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 19(1). 1 is a part, or you can say schedule, on matters like how the government works, what role does it plays, what are its functions and so on. Further, all children of age 6 to 14 years have the right to free and compulsory education. Another fundamental right is right to free and compulsory education एक्ट. और वो स्पेशली कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? आर्टिकल 21A. द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और द राइट टू एजुकेशन. नाउ नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. हर एक रिलीजन को फ्रीडम है
India is a land of many religions. The constitution provides people the freedom of religion, but it cannot be used to destroy public order, health, and morality. Every citizen of India has the right to follow or adopt any religion of his choice. Every religion has to be given equal respect and we have no right to impose our religious beliefs and practices upon other. मतलब कि कोई भी फोर्सफुली अपना रिलीजन किसी को फॉलो नहीं करवा सकते हैं. Inside Article 29 of Indian Constitution gives the minority the right to conserve their distinct culture and language. Now next is राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. मतलब कि अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे एक्सप्लॉइट हो रहे हो या आपको कोई मिस यूज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट भी आपको राइट है. इन ऑर्डर टू सेव द पीपल फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इम्प्लीमेंटेड मिनिमम वेजेस फॉर लेबर. डिसाइड कर दिया जाता है वेज रेट, उनसे कम वो नहीं दे सकते हैं. बैन ट्रैफिकिंग, selling and buying of human beings and forced labor. Selling and buying means what? Human beings का मतलब क्या होता है? तो जबरदस्ती पीपल के पास क्या करवाया जाता है? बेगिंग करवाया जाता है. See, you can see the word begging over here. फिर उनके पास फोर्सफुली सेलिंग बाइंग करवाया जाता है किसी भी चीज़ का या मटेरियल्स का. Declared that children under 14 years of age cannot be employed in factories or mines. मतलब कि जो माइनर्स होते हैं, जो भी चिल्ड्रंस होते हैं उनके पास वर्क नहीं करवाया जाता है. दोज हु आर अंडर दी 14 years एज. नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इट स्टेट्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल्ड टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड एनी अदर कोर्ट at district level if his or her fundamental rights are encroached upon, abridged or snatched away by the state, by an individual or a group of individuals. It is the responsibility of court to defend the right of a citizen except during emergency. मतलब कि अगर आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं फॉलो हो रहे हैं, आपके फंडामेंटल राइट्स आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन गो टू कोर्ट एंड कोर्ट cannot deny for that. The Supreme Court and High Courts are empowered by the Constitution to issue writs for the enforcement of the fundamental rights, and the writs are writs of habeas corpus, writs of certiorari, writs of quo warranto, writs of mandamus, writs of prohibition. Now all these are mentioned different situations according to. Now 6 number is cultural and educational rights. India is a vast country where people of diverse cultures and traditions live together. They have the right to safeguard their culture, language and script. They also have the right to open their own educational institution. The Constitution of India states that the no citizen shall be denied admission to any educational institution maintained by the state and central government. What is written down over here कि इंडिया वास्ट कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे कल्चर के पीपल रहते हैं. तो दे हैव देयर डिफरेंट कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस, दे हैव डिफरेंट लैंग्वेज. तो उनको उतना फ्रीडम है कि वो कोई भी लैंग्वेज में अपने कल्चर के अकॉर्डिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो ओपन कर सकते हैं. And they have that much freedom to speak that and to educate people according to that language. Inside the word habeas corpus, certiorari and mandamus are taken from the Latin language, which means you may have the body to be informed of what is going on. मतलब कि ये जो सारे हमने व्रिट पढ़े उसकी मीनिंग क्या है, तो आपके पास एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप कंप्लेंट्स कर सकते हो अगर आपके जो फॉर्मल जो बेसिक राइट्स है वो पूरे नहीं होते हैं तो. एंड वी कमांड रिस्पेक्टिवली. Now next point is fundamental rights as human rights. The fundamental rights are essential for the well-being of a person, citizen of country,
Any citizen is entitled to some rights that have to be protected. By observing our surroundings, we come to know that people have always fought against injustice and inequality done to them. Every struggle waged by human beings indicates their efforts to create a better surrounding for their survival. A better living is possible only when the dignity and worth of human being is well preserved. This can also be done if we give some basic rights to people. These rights are known as human rights. Now see what is written down over here कि फंडामेंटल राइट्स कैसे ह्यूमन राइट्स में कन्वर्ट होते हैं. तो जब कोई भी पीपल की फंडामेंटल राइट्स फुलफिल नहीं होते, अभी हमने सारे फंडामेंटल राइट्स पढ़े, राइट्स टू फ्रीडम, राइट्स टू इक्वालिटी, देन राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. तो वो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स प्रॉपरली फुलफिल नहीं हो रहे हैं, सो यू कैन स्पीक अप, राइट, यू कैन फॉट अगेंस्ट इनजस्टिस. और उससे क्या होगा, तो आपकी जो वेल बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का जो भी बेटर लिविंग है, वो पॉसिबल हो सकता है. अगर आपकी रिस्पेक्ट और आपकी वर्थ होगी, तभी आप क्या करोगे, तो ह्यूमन बीइंग्स उसे प्रिजर्व रख सकते हैं. अगर वो एक्सप्लॉइट होता रहेगा, तो यू आर नॉट गोइंग टू लिविंग योर लाइफ बेटर. So that's why it is very needed, and that's why these particular rights are known as human rights. Now, humans' rights of several types. Some of them are the right to work, right to safe and healthy working conditions, right to equality before law, right to social security, right and insurance, right to health, etc. All these rights are protected in Universal Declaration of Rights, Human Rights, adopted by the UN General Assembly. UN means United Nations General Assembly on 10th December in 1948. Our Constitution faithfully reflects all these human rights. ये सारे जो भी human rights है वो कहाँ पे mention किए गए हैं, तो that's all are adopted in UN General Assembly on 10th December in 1948. National Human Commission. The National Human Rights Commission in India was constituted in 1993 to guarantee the citizens their rights. किस लिए ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, तो जो सिटीजन्स के राइट्स है उनको गारंटी करने के लिए, मतलब कि गारंटी उनके सारे राइट्स प्रॉपरली फॉलो हो रही है कि नहीं हो रहा है, वो गारंटीड करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1993 में. What are the composition of that commission? It is composed of a former Chief Justice of Supreme Court of India along with a former Chief Justice of High Court. मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनके composition से and two other prominent members who have the best of the knowledge and experience in dealing with human rights. और ऐसे दो particular members जिनके पास बेस्ट एक्सपीरियंस है और नॉलेज है किसके रिलेटेड, तो ह्यूमन राइट्स को डील करने के लिए, ह्यूमन राइट्स अगर है तो उनके साथ डीलिंग के लिए उनके पास बेस्ट नॉलेज है. तो they were made this National Human Rights Commission. Now functions, how they were functioning, how this commission functions. It complements the functioning of Supreme Court and High Courts in keeping an eye on acts that obstruct the benefits of human rights and encourage the endeavor, means hard work, of non-governmental organizations, means NGO. NGO की जो वर्क होती है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. तो मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन में ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनको क्या है, उनको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उनको कांस्टेंट अपने ऑब्जर्वेशन रखना है कि हर एक ह्यूमन राइट्स को प्रॉपरली बेनिफिटेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. एंड इवन दे वर एनकरेजिंग होम NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो ह्यूमन राइट्स के लिए वर्क करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. नाउ inside, fundamental duties were incorporated in our constitution in 1976 through the 42nd
अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन में कांस्टेंट चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, राइट। तो 42nd अमेंडमेंट जो था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया था इन 1976। Now, fundamental duties. What are the fundamental duties? Rights and duties are reciprocal. Reciprocal means what? Opposite. Every rights carries a duty with it. हर एक rights के साथ duty होती है. In return, for fundamental rights, the society expect the citizens to perform certain obligations which are collectively known as duties. मतलब हर एक rights के साथ society को वो चीज़ के लिए ऑब्लिगेशंस भी होते हैं. नाउ इफ यू हैव फ्रीडम दैट यू हैव राइट टू स्पीक, राइट, बट यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग वर्स्ट. Okay, so that is the obligation. Example is given here. To stand up for our rights without performing our duties would be meaningless. अगर हम हमारे ड्यूटीज को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेंगे और फिर हम ऐसे ही राइट्स के लिए फाइट्स करेंगे तो it's not suitable and it is meaningless. For example, if the Constitution give us the right to speech, it also binds us and tell us not to hurt the feelings of others. See what I told you earlier, that is only written down कि हमें बोलने का right दिया गया है, but we cannot hurt other people's feelings. Similarly, if we have the right to practice the religion of our choice, we have a duty to allow other to practice their religion. अगर हम हमारा religion properly practice कर सकते हैं तो we cannot, you can say we cannot disturb other religions and other people to practice their religion. Some important fundamental duties assigned to the citizens are to मतलब कि कॉमन जो हमारी ड्यूटीज है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो फर्स्ट, रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम. नेशनल फ्लैग कभी भी जमीन पे गिरना नहीं चाहिए, दैट इज फर्स्ट. उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. नेशनल एंथम में उनकी रिस्पेक्ट के लिए हमें क्या है, तो स्टैंडिंग पोजीशन जो है, जब भी नेशनल एंथम बजता है तो वी सपोज टू स्टैंड, राइट. देन टू प्रिजर्व द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री, मतलब कि हमारे जो भी हेरिडिटरी साइट्स है, सारी हेरिटेज साइट जो है, जैसे कि ताजमहल है या जितने भी एंशियंट या मेडिवल पीरियड के कंस्ट्रक्शंस हैं उनको हमें प्रिजर्व रखना चाहिए. टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट इट्स आइडियल एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज जो होते हैं उनके जो आइडियल्स होते हैं वो प्रॉपरली हमें उनको अबाइड रखना चाहिए. टू डिफेंड द कंट्री एंड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, एक चारा रखना चाहिए. टू मेंटेन एंड प्रिजर्व पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को अच्छे से यूज करना चाहिए. टू थिंक ऑफ दैट वर आवर ओन प्रॉपर्टीज. टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, मतलब कि पेशेंस रखना सीखना चाहिए. कभी भी ऐसे ही नॉर्मल चीज़ों पे भी गुस्सा नहीं होना चाहिए या फाइट्स पे नहीं आ जाना चाहिए. टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व अवर नेचुरल environment. Inside, keeping in view the multi-religious fabric of India, the word secular was added to the preamble. Secular word हमारे preamble में कब include हुआ था? In 1976 through 42nd Amendment of Indian Constitution. Now we are going to learn about secularism. The Indian Constitution allowed each and every citizen of India the freedom to live by his or her religious belief and practices as they interpret them. मतलब सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, तो जो भी पीपल जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं दे कैन बिलीव इन दैट, दे कैन प्रैक्टिस दैट रिलीजन विदाउट interpret them. The term secularism emerged during our freedom struggle. The prominent leaders of the Congress were committed to the ideals of secularism, but each of them expressed different views on it. When India became free in 1947, it found itself engulfed in the wave of religious frenzy. Engulf मतलब क्या होता है, तो 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, on that time so many religions were there,
तो वो पूरा घिरा हुआ था, मतलब कि होल इंडिया इज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजन्स, फ्रेंसी इन द फॉर्म ऑफ वर्स्ट कम्युनल वायलेंस, और उसके वजह से बहुत सारे क्या होते थे, वायलेंस भी होते थे. इंडिया अ सेक्युलर स्टेट. India is the birthplace of many religions. The state does not interfere in the religious matter, nor does it discriminate against the followers of a particular religion. The constitutional expert had clearly observed the examples of various countries of the world where discrimination and precautions were done on the basis of religion. They felt that religious discrimination and precautions were done on the basis of religion. They felt that religious discrimination could take place when a particular religion was given official status over the other religion. कब डिस्क्रिमिनेशन होना स्टार्ट होता है, तो जब किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को हम ऑफिशियल स्टेटस, मतलब कि स्टैंडर्ड स्टेटस दे देते हैं, तब वो क्या हो जाता है, कंपैरिजन में आ जाता है कि ये जो रिलीजन है वो बेस्ट है, दिस पर्टिकुलर रिलीजन इज वर्स्ट वन. तो ये डिफरेंस कब क्रिएट हो जाता है, तो वो सोसाइटी क्रिएट करती है जब किसी एक रिलीजन को स्टैंडर्ड कर देती है, वो इम्पोर्टेंस देना ज्यादा चालू कर देती है. So our constitutional expert decide not to give states the power to discriminate against its citizens on the basis of their religion. Moreover, they handed over the responsibility of protecting the minority in the hands of the government. और ये responsibility भी किसके hands में है, तो government के hands में है, to protect the particular minorities. Right to freedom of religion mentioned in Article 25 and 28 to 28 make India a secular state. And now we are going to learn about each and every articles that mention something about secular state. Article 25 to 28 relating to the right to freedom of religion in the Constitution of India promotes secularism in the following ways. Now first is Article 25. What it guarantees? It guarantees right to profess, propagate एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन. मतलब कि आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो इन विच यू आर बिलीव, but restrictions can be imposed by the state in the interest of public health and order. बस स्टेट के रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं किस में, तो जिसमें पब्लिक का हेल्थ होगा, हेल्थ के रिलेटेड अगर कुछ भी आएगा या कोई ऑर्डर या लॉज के अगेंस्ट में कुछ होगा, तो बट ऑफ कोर्स स्टेट गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्टेड इट. Article 27, it guarantees the right to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, but it is subject to public morality and health. इसमें क्या लिखा है, तो आर्टिकल 26 में क्या अलाउड किया गया है, तो कोई भी रिलीजियस के पीपल को राइट है इंस्टीट्यूशन ओपन करना जहाँ पे वो रिलीजियस नॉलेज दे सकते हैं या चैरिटेबल पर्पस के लिए वो इंस्टीट्यूशन ओपन कर सकते हैं, बट वो जो भी इंस्टीट्यूशन ओपन किया गया है वो पब्लिक की हेल्थ और उनके मॉरल वैल्यूज को ध्यान में रख के किया जाना चाहिए. आर्टिकल 27 it states that no taxes shall be levied on any religion. कोई भी पर्टिकुलर टैक्सेस नहीं डाले जाएंगे रिलीजन पे. आर्टिकल 28 it states that no religious instructions shall be propagated in any educational institution run wholly by government fund. मतलब कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स या गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें कभी भी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दिया जाता है, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते. एनी काइंड ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस वर नॉट गिवन इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस. Objectives of a secular state. According to the Constitution of India, a secular state ensures that first, no religion or community will try to dominate the other. कोई भी किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को डोमिनेट नहीं कर सकता है. Second, the state will not enforce any religion as its own. And third, members from the same community will not dominate as a religious community. Now we are going to learn about the uplifting the
Marginalized communities realize their rights. Marginalized communities mainly consist of the economically weaker and socially backward sections, means for students, STs, scheduled castes, scheduled tribes और other backward classes. तो वो किस में आएंगे? Marginalized communities में आएंगे. These people have been ignored due to several reasons. However, after independence, the Indian government adopted the goal of social justice and took strong measures to improve their conditions. और इसी की वजह से गवर्नमेंट ने उस पर्टिकुलर सेक्शन पे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं. There are certain provisions which help in the upliftment of such communities. Article 17 of the Indian Constitution states that untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Article 17 में क्या लिखा गया है? तो कोई भी बैकवर्ड क्लासेस है उनके साथ अगर अनटचेबिलिटी फॉलो किया जाएगा तो वो क्या है? वो एबोलिश कर दिया गया है, मतलब कि वो बंद कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया गया है. एंड इफ समवन डूइंग दैट तो वो पनिशेबल है. Article 46 states that government shall take care of educational and economic interest of weaker sections of the society, particularly of marginalized groups, and shall protect them from social injustice and other form of exploitation. मतलब कि 46 में ये मेंशन किया गया है कि weaker section के जितने भी पीपल हैं अगर उनको एजुकेशन या वो इकोनॉमिकली वीक होते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाएगा और उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सोशल इनजस्टिस. थर्ड, इन गवर्नमेंट जॉब्स सम पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर एससीज. मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में कितनी सीट्स रिजर्व रखी जाती है SC, ST और OBC के लिए. दैट इज 15% फॉर SCs, 12% फॉर STs एंड OBC 27%. Fourth number, in educational institution also seats are reserved for them. Fifth number, coaching and training for various competitive exam is provided free to the students of marginalized community. बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जो होती है वो उनके लिए फ्री होता है, जब दूसरे जो भी अपवर्ड क्लासेस के पीपल होते हैं उनके लिए वो कैसा होता है? पेड एग्जामिनेशन होता है. 6th number, a national commission for SCs and STs have been set up to safeguard their right. Earlier we only learn about the national commission, right? तो वो भी किस लिए बनाया गया है? ST, SC के लिए बनाया गया है to protect their rights. Various scholarship programs have been launched for ST, SCs students at pre-matric and post-matric levels. बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं. प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक मीन्स व्हाट? अगर वो रिजल्ट उनका आ जाता है, जब वो एजुकेशन लेते हैं तो उनका जब रिजल्ट आ जाता है तो वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है और उससे पहले भी उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है. 8 number, no person of marginalized communities can be prevented from entering hotels, temples or any other public प्लेसेस. और पब्लिक प्लेसेस में भी उनको एंटरिंग करने से या फिर उनके आने से कोई भी प्रिवेंट उसे नहीं कर सकता है. दे वर नॉट एक्सप्लॉइट देम और दे वर नॉट व्हाट वी कैन से कि उनको कोई भी एक्सप्लॉइट या इनजस्टिस नहीं कर सकता है उनके साथ.